Hey, didn't really have a plan in the morning, as mentioned in my post market on Friday. Okay day. So basically, wasn't really looking to short this market. Same volume structure, where if you don't want to really buy, don't short till this is broken, and it gave you a lot of uh, good structures, or opportunities to buy. I shared a trade around 1 o'clock, where my system actually gave a buy above 145 for a new high, even though the targets were very less because the new high was basically 95 and this high was basically 96870, 25 points target. This actually went towards 125, but you can't really catch the top exactly. So this was also more like a scalp trade for me. I was expecting it to come back to VWAP, but wasn't really expecting it to fall below VWAP or close below VWAP. This is my reference. Uh, these are my system references. If you watch my post market, you know what this is. These are my system references on which I share my trades. So, this was scalp buy. Uh, wasn't really expecting this kind of a closing. Hence, I would be waiting for. Don't really have a plan tomorrow. Also at open, I will probably wait for today's high or today's low to break to actually get into a trade without my system. If I'm looking for buying or selling opportunity, I'll probably wait for today's high to be taken out in spot and today's low to be taken out. So, and then I'll look for, if high is taken out, of course I'll look for buying opportunities. Low is taken out, I'll look for selling opportunities. Yeah, that's the plan for tomorrow. No plan at open, but I'll wait for probably 1 hour candle to close and properly, and then decide what to do. In terms of intraday, as I said, don't really sell in such structures. If you're not looking to buy, you'll not end up losing money. And gave this trade, so it was very the target was really small, because 145 almost came. When I gave this trade, it was around 1 o'clock at VWAP 17030. So I was expecting 145 to actually come or be at VWAP, and it turned out to be near highs, so the target became very less. Anyways, this did do well, but only 25-30 points. Bank Nifty did not trade because there were no volumes. Nothing more to add for today. थैंक यू. देखते हैं. तो बेसिकली फ्राइडे को मैंने बोला था कि मेरा कोई प्लान नहीं ओपन पे, और स्ट्रक्चर अगर आप देखें आज निफ्टी में तो अच्छे वॉल्यूम्स थे, अप वॉल्यूम्स थे. तो इस स्ट्रक्चर को कभी शॉर्ट मत करिए. ये मैंने कितनी बार समझाया है पोस्ट मार्केट में. जब तक ये टूटता नहीं है, इसको शॉर्ट करने के लिए मत देखिए. अगर आपको बाय नहीं करना तो आप शॉर्ट मत करिए. बैंक निफ्टी में कोई भी ढंग के वॉल्यूम्स नहीं थे, इसलिए मैं बैंक निफ्टी से दूर ही था आज. मैंने एक ट्रेड दिया था 1 बजे के आसपास शायद अपने चैनल पे. उसमें था बेसिकली 145 के ऊपर बाय करना है, टारगेट नया हाई. बहुत ही कम ये चला ट्रेड, लेकिन बहुत ही कम पॉइंट्स मिले इसमें, क्योंकि जब मैंने ट्रेड दिया था 1 o'clock हो रहा था, शायद 1 o'clock क्लोज हुआ था शायद, तब ये VWAP पे था, और 115 भी VWAP के नीचे गया, जो कि 17,000 था. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसको भी VWAP के नीचे रहने के लिए 145 को, पर ये 145 ऊपर आ गया और काफ़ी हाईस के आसपास आ गया. तो इसका हाई था 1770, इसके ऊपर बाय करना था ट्रेड में, और टारगेट था नया हाई. तो 20-25 पॉइंट्स मिले. बहुत ही कम होते हैं वो फ्यूचर में. अगर आप ऑप्शन सेल भी कर रहे हैं तो भी ज़्यादा नहीं मिले, और ये भी बहुत मुश्किल होता है पकड़ना हाई. मैंने टारगेट, इसलिए मैं यूजुअली टारगेट्स नहीं देता वीडियो में. मैं टारगेट इसलिए दिया था कि मुझे लग रहा था कि ये शायद रिवर्स कर जाएगा, तो ऐसा ही हुआ. लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये क्लोज़ करे नीचे VWAP के. तो अब कल भी मेरा कोई ओपन पे प्लान नहीं है, लेकिन मैं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा अगर बाइंग या सेलिंग की, वॉल्यूम स्ट्रक्चर सिस्टम को छोड़ के. अलग से अगर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा तो मैं देखूंगा 1 hour क्लोज आज के हाई के ऊपर क्लोज हुआ तो बाय करने की सोचूंगा. अगर 1 hour क्लोज आज के लो के नीचे क्लोज हुआ तो सेल करने के लिए देखूंगा. उससे पहले मैं ओपन पे कुछ ट्रेड नहीं करूँगा. थैंक यू.